अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है, लेकिन वो खिता है जहाँ पाक इस्लाम फिर कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। पाक इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, खिदमत, दूसरों की खिदमत और अल्लाह सुब्हान व तआला की खिदमत। यही है पाक इस्लाम, जो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अभी फिर कायम हो रहा है। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि काफ़ी गलत फहमियाँ फैल गई हैं इस बात के बारे में, वहदत-अल-वजूद और वहदत-अश-शुहूद। तो मेरे नज़दीक ये वहदत-अल-वजूद सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको ठीक नहीं समझा। यानी बहुत सारे सूफियों ने महसूस किया वहदत-अल-वजूद मतलब वो अपने आप को 100% भूल जाते हैं और वो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि सब कुछ एक ही है, सब अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह है। तो ये हम कह सकते हैं ये 100% गलत नहीं है, लेकिन ये 100% हकीकत भी नहीं है। वहदत-अश-शुहूद 100% हकीकत है। यानी जब हम अपने आप को भूल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं, वो एक हकीकी समझ है। लेकिन वो 100% हकीकी नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। तो अगर हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, वो 100% हकीकत नहीं हो सकते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करना चाहिए, और जो कुछ अल्लाह ने बनाया है उसको भी याद करना चाहिए। फिर ये 100% हकीकत है। इसको हम वहदत-अश-शुहूद कहते हैं। तो मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी साहब ने समझाया, उन्होंने एक मिसाल दिया कि दिन में हम सूरज को देखते हैं और हम सितारों को नहीं देखते हैं, क्योंकि सूरज सामने है, इतनी रोशनी है सूरज के कि हम सितारों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सितारे जो हैं वो वजूद में नहीं हैं, वो भी वजूद में हैं, लेकिन हम उस वक्त उनको नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम सूरज के सामने हैं। तो ऐसा ही जब हम अब अल्लाह सुब्हान व तआला के मौजूदगी में होते हैं, कुछ सूफियाँ वो दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ सूरज को, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को देख सकते हैं। लेकिन हकीकत में वो सितारे मौजूद में हैं, वजूद में हैं, लेकिन उनको दिखने में नहीं आते हैं। तो वैसे ही जब हम सूरज को भी समझ सकते हैं और सितारों को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर ये 100% हकीकत है। इसको हम वहदत-अश-शुहूद कहते हैं। तो मैं बस इस बात को थोड़ा समझाना चाह रहा था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो हकीकी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब को मैं मानता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये कोई वहदत-वजूदी बन गया। ऐसे अरबी ने सब मज़ाहिब को मान लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो आज कल बहुत सारे वहदतुल-वजूद लोग हैं, जो वो कहते हैं वो हकीकी है, वो इब्न अरबी की हकीकी तालीम है। नहीं, मतलब मैं एक और बार ये समझाऊंगा, मैं भी मानता हूँ कि हर एक मज़हब सही है, मतलब हर एक मज़हब की बुनियाद सही है, हर एक मज़हब अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आया है। उनमें बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, लेकिन बुनियादी जो हकीकत है वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने पैगंबरों के ज़रिए दिया था इंसान को। तो इब्न अरबी भी इस बात को समझते थे कि हर एक मज़हब में हकीकत है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो आज कल बहुत सारे लोग वहदतुल-वजूद मानते हैं, ठीक तरह से नहीं मानते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी इस किस्म की गलत वहदतुल-वजूद मानते हैं, तो उसको हम नहीं मानते हैं। नहीं,
یہ بہت پھیل گیا تھا ہندو مذہب میں وحدت الوجود، فلسوف میں، فلاسفرز، ان کو کیا بولیں گے، جو ہندو مذہب میں بڑے فلسوف تھے، انہوں نے اس بات کو پھیلا دیا، جیسے شنکراچاریہ بڑا طاقتور استاد تھا، لیکن اس کی جو تعلیمات ہے وہ 100% صحیح نہیں ہے. وہ اس وحدت الوجود کو پھیلائے تھے جو غلط ہے، یعنی سب کچھ اللہ ہے. یہ ہم نہیں مانتے ہیں. سب کچھ اللہ ہے، لیکن اس کا مطلب، اس کا حقیقی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہیں. تو وہ اللہ سے الگ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے الگ بھی ہیں. وہ اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی طاقتیں ہیں. تو یہ دونوں چیز وجود میں ہیں، سورج اور ستارے. تو کیونکہ یہ ہندو مذہب میں بہت پھیل گیا تھا، اس لیے یہ اسلام میں بھی اس کا اثر ہوا تھا کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ ہے. نہیں، اصلی وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ ہر ایک چیز میں ہے، اور ہر ایک چیز کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک چیز خود اللہ ہے. وہ غلط فہمی ہے. اچھا، شاید یہ کافی ہے. امید ہے اس ایک ہی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں کہ سورج اور ستارے، جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں دن میں، ہم ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ستارے جو ہیں وہ وجود میں ہیں. تو ویسے ہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاضری کرتے ہیں یا ان کے سامنے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اور دوسری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں شاید کہ اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے ایک طرح سے، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزیں بھی وجود میں ہیں. وہ اللہ کے مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، جیسے ستارے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مکمل علم ہے وحدت-ash-shuhud، جو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے سکھایا تھا. اچھا، میں بس دیکھوں گا کسی کا کوئی سوال ہیں. کوئی سوال میں نہیں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں. تو پھر میں مطلب محمد شمسی طبیر کہہ رہے ہیں I have no question. تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے. تو ابھی ہم شاید آخر میں پھر یہ بولوں گا کہ میرے نزدیک پاکستان میں یہ اصلی وحدت-ash-shuhud کا فلسفہ جو ہے یہ قائم ہو جائے گا، اور یہ جو غلط فہمیاں پھیل گئی تھیں وحدت الوجود اور وحدت-ash-shuhud کے بارے میں، وہ سب ٹھیک سمجھ میں آئیں گے. اچھا، سعد شہزاد خان کہتا ہے آپ بہت خالص اردو فرما رہے ہیں. اللہ کی قدرت ہر چیز سے جھلکتی ہے، مگر خود اللہ چیزوں میں نہیں، بلکہ اللہ سب پر قادر اور غالب ہیں. ہاں، تو یہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے سعد شہزاد خان صاحب، یہی ہے اصلی پاک اسلام. اور یہ ایک غلط فہمی ہے. اگر کوئی، جیسے بہت سارے ہندو آج تک بھی مانتے ہیں کہ حقیقت میں سب کچھ برہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ برہم کے علاوہ اور کچھ وجود میں ہے ہی نہیں حقیقت میں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. مطلب اللہ کے علاوہ اور کچھ وجود میں نہیں ہے. یہ دونوں چیز وجود میں ہے. ایک ہے اللہ قادر مالک، اور دوسرے چیزیں بھی وجود میں ہیں. ان کی وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے بغیر، لیکن اللہ کے ساتھ، مطلب اللہ کے قدرت سے، اللہ کے طاقت سے ان چیزوں کی بھی وجود ہے، ہمارے بھی وجود ہے.
अल्लाह की ताकत की वजह से। तो अल्लाह के बगैर हमारे कोई वजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के साथ हमारा वजूद भी है। जैसे सूरज है और सितारे हैं, इसी मिसाल को हम याद करें कि हम सितारों को नहीं देख सकते हैं दिन में, लेकिन वो वजूद में हैं। तो जो वहदत वजूदी लोग, अल्लाह जो हकीकी वहदत वजूद, जैसे इब्न अरबी साहब, उनका कहना सही है कि जब हमने अल्लाह सुब्हान व तआला का सामने आया तो हम और कुछ नहीं देख सके, अपने आप को भी नहीं देख सके। तो वो हकीकत है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हकीकत में सितारे भी वजूद में हैं, सिर्फ हम उनको उस वक्त देख नहीं सका, लेकिन वो वजूद में है। अच्छा, गुलाम महबूब कहते हैं, वेरी गुड टॉपिक। What is purpose of creation of this universe and human beings? Please elaborate the haqiqat a Muhammadiyya, peace be upon him. So your question is in English, so maybe I will answer in English. The purpose of this creation of this universe and of human beings is very simple. The purpose of creation is for us, the creation, to know God and to worship God. That is very, very simple. And it is also said, although this is not possible for me to understand very well, or for us to understand, but it was also for God to know us. Allah subhanahu wa ta'ala wanted to know more. He wanted to expand his experience, so therefore he created the universe. But also, it was mainly for us to know him. So this mutual relationship of knowledge and love is also said that God loved us, therefore he created us. So it is, love is the basis. And the haqiqat Muhammadiyya, my understanding is, and I've explained this before, which is a little unusual for some people, but from extraterrestrial sources, we have understood that there are millions of universes, not only our universe. Or anyway, the word is not exactly clear, exactly what the word universe means, but we can use the word creation. So we exist within a certain creation. There are many, many other creations also. Each creation has its, I call them sub-creators. So Allah subhanahu wa ta'ala is the original supreme source of everything, but he himself does not directly create all the universes. He has servants who create the universes. And those universes exist under the authority of those sub-creators as the representatives of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, each universe, in addition to that sub-creator, has other personalities who are sent by Allah subhanahu wa ta'ala to that region of existence to create a universe. And one of those personalities is the very intimate friend and advisor of the sub-creator. So my understanding of the haqiqat Muhammadiyya is that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the presence on earth of that intimate friend and advisor of the creator of our universe. So he was that Nuri Muhammad, you may say. Muhammad, the spiritual being who existed long before 1440 years ago, he was the intimate friend and advisor of the creator of our universe. So he existed before the creation of our universe. And that same reality appeared on our planet as the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. So that's my understanding of the haqiqat Muhammadiyya. Okay, Saad Shehzad Khan says, Sir, you are an inspiration. It is always a pleasure to attend your lives. Please pray for the people of Kashmir. We are inflicted with a very tough time. Yes, the people of Kashmir are now undergoing a very, very tough time, very, very
horrible time of suffering. But as I have said before, it is a sacrifice that the people of Kashmir are undergoing, or giving, you may say, for the achievement of their autonomy. The people of Kashmir will become autonomous as a result of this horrible injustice and these absolutely abominable atrocities that are now being inflicted by the government of, I don't even call it the government of India, because it's Modi's government. It's the government of people who are not following the Indian motto of Satyam eva jayate, the truth conquers. So Modi and his party are utilizing untruth. They're utilizing lies. If you see what they're saying in the United Nations about Kashmir, what they're doing now in Kashmir, it is all lies. So the Modi government is very foolishly taking the steps that they think will solidify their government and their power, but actually it will result in the loss of their power. And when the intelligent people understand, all over the world intelligent people, and the intelligent people of India, as they understand the lies that the Indian government is telling, it will result in the freedom of the Kashmiri people and the independence of Kashmir internally. I've explained this in detail before also. Kashmir will become internally fully self-governing. The Kashmiri people will run their own affairs internally. And the external affairs of Kashmir, believe it or not, will be run by India and Pakistan jointly. So this was explained to me. I've explained this in the past also, over 20 years ago now, by a great Sufi saint, that this is what would happen in Kashmir. So now we are seeing that actually happening with this horrible thing that's happening now in Kashmir. It is the end of the Indian injustices against Kashmir, because they'll become so bad that people will understand them and will reject them. People in India will reject them. The good people, the intelligent people of India will reject this Modi mobster Modi, I call him Monster Modi. It's horrible what they're doing. It's very sad. But it is all part of the system by which Kashmir will become independent. So it's a lot of suffering. It's a sacrifice that especially the young men of Kashmir are being abducted from their homes by the military. They're being tortured, and the families are threatened that if you do anything to protest even, or to try to do anything against the Indian government, your sons will never come back to you. So people are terrified, but this is a period of sacrifice, you may say, and the result will be very wonderful. The independence, the internal independence of Kashmir, where Kashmiris will run their own affairs, inshaAllah. And the external affairs will be run by the combined and efforts of India and Pakistan working together, believe it or not. This is what I was told, again, more than 20 years ago. This will happen. Okay, Muhammad Abdullah Babar says, Hazrat Shah Waliullah says that Wahdat-al-wujud and Wahdat-ash-shuhud is the same from their core. These two terms differ only apparently. What are your views on this? The true understanding of Wahdat-al-wujud and the true understanding of Wahdat-ash-shuhud are the same, but most people understand Wahdat-al-wujud in a different way. The correct understanding, as I've explained, is that Wahdat-al-wujud means that the person who sees Wahdat-al-wujud only sees the sun and not the stars, whereas the person in Wahdat-ash-shuhud understanding sees both the sun and the stars. So if it's the daytime and you see the sun and you don't see the stars, that is not false, that is true. So seeing the sun only in the daytime and not the stars, and seeing both the sun and the stars, or understanding the simultaneous existence, although you don't see the sun at night, you see the stars, but at one short time you can sort of see the sun setting or rising. Not right at that time, but before, at dawn and sun, after sunset, you can start seeing the stars. So really, at the core, they're the same. But the common understanding of Wahdat-al-wujud, which is not Ibn Arabi's understanding, I believe, which said everything is Allah, that is not correct. So this is my understanding of how Wahdat-al-wujud and Wahdat-ash-shuhud are actually the same,
when we understand this example. The sun and the stars are both there, but when you're in the presence of the sun, you may not see the stars. So therefore, Wahdat-al-wujud and Wahdat-ash-shuhud are both correct, but Wahdat-al-wujud is not as complete as Wahdat-ash-shuhud. All right. Saad Shehzad Khan, can you please tell the name of the Sufi who made this prophecy? He did not want his name known, so I have called him Hazrat Baba, Hazrat Sufi Baba, but he asked me to not tell his name ever. So I cannot tell you the name, but this was what he said. Okay, thank you all very, very much. शुक्रिया. ये अंग्रेज़ी में आखिर में हो चुका क्योंकि बहुत मुश्किल सवालात मिले मुझे और वो अंग्रेज़ी में थी, सो मैंने उनको अंग्रेज़ी में जवाब दिया. लेकिन मैंने ये बताया वहदत-उल-वजूद का मतलब है सूरज को हम देखते हैं दिन में और सितारों को नहीं देखते हैं. वहदत-अश-शुहूद का मतलब है हम सितारों को भी देखते हैं और सूरज को भी समझते हैं कि दोनों वजूद में हैं. तो वहदत-उल-वजूद नामुकम्मल है, हकीकत है लेकिन नामुकम्मल है, जबकि वहदत-अश-शुहूद हकीकत है और मुकम्मल भी है. अच्छा, शुक्रिया. खुश रहो, फिक्र नहीं करो. कश्मीर में जो जुल्म, बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं आजकल, उसका नतीजा होगा कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की अंदरूनी मामलात में आज़ादी. कश्मीरी लोग खुद कश्मीर को चलाएंगे और कश्मीर के जो बाहर वाले मामलात हैं वो इंडिया और पाकिस्तान मिलकर चलाएंगे इंशाअल्लाह. अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर कश्मीर के एक्सटर्नल अफेयर्स चला सकेंगे, लेकिन ये हो जाएगा इंशाअल्लाह. जब हिंदू मज़हब में जो वहदत-उल-वजूद की फ़लसफ़ा है, जब उसको छोड़ देते हैं लोग या इसको हकीकत समझते हैं कि हकीकत में अल्लाह सुब्हान ताला भी वजूद में हैं और हम भी वजूद में हैं, हम उनके छोटे छोटे खादिम हैं और वो मालिक है. ये हिंदू मज़हब के हकीकी तालीम है, लेकिन बहुत हिंदुओं ने इसको भूल गए हैं और वो वहदत-उल-वजूद को गलत तरीके से मानते हैं और समझते हैं. Achha, Kiran Shafat, sir, please be kind to tell me who is the sub-creator of our universe, and please explain Haqiqat-e-Muhammad again. Okay, I didn't mention today, I have in the past. The sub-creator of our universe appeared, I believe, on our planet as Hazrat Isa alayhi salam. Jesus Christ was the appearance on our planet of the sub-creator of our universe, just as Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the appearance on our planet of the intimate friend and advisor of our sub-creator. So both of them were existing before the creation of this universe, which is what Jesus Christ referred to when he was asked. He said, "Before Abraham was, I am." In other words, he was explaining that he wasn't just born as the son of Mary and began existing then. No, he was existing before his appearance as the son of Mary on this planet. So similarly, I believe that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was existing before his appearance on this planet. And those two great sublime personalities were sent by Allah subhanahu wa ta'ala to this region of existence to create our universe. And others, at least one other was also with them. I know that those three personalities who I've talked about in detail at other times were all present before the creation of our universe. And that third personality, I believe, I may be wrong, I don't say any of this as absolute truth, but this is what I believe, this position you can say I have taken, this is my understanding about the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and Jesus Christ, peace be upon him. They were two great personalities before the creation of our universe, and the third personality who was with them appeared on our planet as the mother of Jesus. That is the Holy Virgin Mary. She also
I believe it was in existence before she appeared on this planet. And some people have suggested, and it may be true, that Fatima, the daughter of the Holy Prophet Muhammad, was also an appearance on this planet of that third pre-existing creatures of our universe. So I don't know if that's correct, but that I've heard, and I think it is very possible, because she was not an ordinary person, obviously. Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, would actually stand up whenever his daughter, Fatima, Raziyallahu ta'ala anha, whenever she walked into the room, Holy Prophet, peace be upon him, would stand up. He gave her so much respect. So she was also not an ordinary human being, in my understanding. She was the third of those original three personalities who were sent to this region of the universe to engage in the creation of our universe. Okay, thank you all very much. Allah Hafiz. Khush raho. Fikr nahi karo. Sab kuch Allah ki haath mein hai. Sab kuch theek ho jayega. और पाकिस्तान जिंदाबाद. पूरी दुनिया के लोग समझेंगे कि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ पाक इस्लाम, मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई कायम हो जाएगा. हो रहा है, अभी ही हो रहा है, और लोगों को ये समझ आ रहा है आजकल. अल्लाह